Hello everyone, hope you all are doing great. This video is going to be about neuromuscular junction, okay? So this is a very important topic in view of your college exams and university exams. The questions mainly asked will be define neuromuscular junction, explain neuromuscular transmission, discuss the steps of neuromuscular transmission, define end plate potential, okay? But the most high-yield topic of this neuromuscular junction is going to be your myasthenia gravis, okay? It's a very important topic and will be covered in the next part of the video, okay? Second part, okay? So, okay, since I've been suggested to talk in Hindi as well, so I'll be explaining it in English, okay? So, we'll begin. सबसे पहले I want you to differentiate between neuromuscular junction and motor unit because often we consider it the same, okay? So neuromuscular junction and motor unit is not the same. वो same नहीं होते हैं. See, पहले तो NMJ junction meaning it is the space. किसके बीच का space? Neuromuscular. So nerve and muscle के बीच का space is your neuromuscular junction. But इन दोनों में what is the difference is? See, ये एक न्यूरॉन है right? And ये इसका axon है and ये उसके axonal branches है, okay? एक ही न्यूरॉन के एक्सोनल ब्रांचेस है एंड ये तुम्हारे मसल फाइबर्स है, ओके? ये तुम्हारे स्केलेटल मसल के फाइबर्स है. सो ये एक न्यूरॉन के एक एक्सॉन टर्मिनल एंड स्केलेटल मसल फाइबर के बीच का स्पेस, दिस इज योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ओके? सो NMJ इज द स्पेस बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड वन स्केलेटल मसल फाइबर. Whereas motor unit means it is consisting of all the axon terminals of a neuron and all the skeletal muscle fibers which it is supplying, okay? So motor unit consists of one motor neuron and many skeletal muscle fibers, whereas neuromuscular junction, it is also made up of one neuron only. More specifically is one neuron का axonal branch and one skeletal muscle fiber. But often you will see कि what we say is neuromuscular junction is between one neuron and one skeletal muscle fiber, whereas motor unit is between one neuron and many skeletal muscle fibers. ठीक है? तो ये difference समझ में आ जाना चाहिए because often मतलब most of the people consider it the same only. Now, another question which I want to ask is कि suppose MCQ आया, NMJ neuromuscular junction is a sensory synapse, mixed synapse, motor यानी कि efferent synapse और electrical synapse. तो आंसर क्या होगा? C. NMJ, what it is? NMJ पहले you should know कि when your muscle is going to contract, muscle contract करने वाला है, उसके just पहले what is the conversation happening between your neuron and your skeletal muscle fiber? उनके बीच में क्या हो रहा है? ये होता है neuromuscular transmission, okay? So NMJ, see, sensation आया suppose, so it will go through the sensory neuron motor neuron को signal देगा and motor neuron will give the signal to skeletal muscle fiber कि contract, relax, whatever it has to do. So NMJ will always be a motor synapse क्योंकि हमेशा motor neuron will give the signal to the skeletal muscle fiber. Never a sensory neuron is going to give, right? So NMJ is always a motor या efferent synapse. It is never afferent, okay? Never sensory. कि sensory से motor neuron से skeletal muscle fiber, okay? Now we will understand actually में क्या convo हो रहा है, okay? What is actually happening, okay? See. It's a line from Ganong. It says that each end plate receives input from a single nerve fiber. Okay. So another important point is what is end plate? End plate मतलब ये skeletal muscle fiber. Okay. See, our topic of discussion is neuromuscular junction. Okay. तो अभी अपन इसको ही consider करते हैं. So what is end plate? End plate है ये तुम्हारा one skeletal muscle fiber है ना. So इसको ही हम end plate बोलते हैं. Motor end plate. Okay. So skeletal muscle is your end plate. So what is it saying is each end plate मतलब हर एक skeletal muscle fiber receives input from a single nerve fiber. It is receiving input from a single nerve fiber, है ना? Okay, so hope you have got it.
Now we'll go with the steps of neuromuscular transmission. Very important, okay? Sequence याद होना चाहिए, okay? So ये एक axon terminal है और ये skeletal muscle fiber. ये junction है. This is the zoomed in picture of the neuromuscular junction, okay? ये क्या है? Axon का terminal है and ये skeletal muscle fiber है, okay? सबसे पहले सी एम क्या है? मसल को सिग्नल देनी है, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स. मतलब व्हाट यू वांट इज मसल में पोटेंशियल चेंज हो, रेस्टिंग स्टेट से मसल में पोटेंशियल चेंज हो. सो पोटेंशियल चेंज होने के लिए वील गो इन द रिवर्स ऑर्डर कि व्हाट डू वी वांट. ओके, सो मसल में पोटेंशियल चेंज चाहिए. सो वी नीड पोटेंशियल चेंज. हाउ विल इट अकर इज by the influx of any ion. Mainly it is sodium ion. Action potential में which is the ion incoming, it is a sodium ion. So we want influx of sodium. So influx of sodium, वो signal कहाँ से आएगा? It will come from your nerve. So see, sensory neuron signal दिया motor neuron को. अब ये motor neuron पे signal आया है. Sensory से motor signal आया है. मतलब motor neuron में भी action potential generate हुआ है. Means there is going to be a potential change. मतलब motor neuron पे the potential is now plus 30 millivolts because action potential आ गया है. ठीक है. So motor neuron में action potential has come. Now, very important point, remember it as a fact कि in the ECF मतलब ये जो space है पूरा, in this extracellular space, calcium ions and sodium ions are always in excess. Calcium ions and sodium ions are more in your NMJ. ठीक है, but they are not going inside the neuron, neither the neuron nor the skeletal muscle fiber unless and until action potential है. So अभी तो action potential आ गया है, प्लस 30 millivolts आ गया है. अब प्लस 30 millivolts आया है तो कैल्शियम के, कैल्शियम बहुत होता है और सोडियम भी बहुत होता है, तो कैल्शियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो होंगे दे विल ओपन अप एंड कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा. कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा. So a question may arise that calcium was always more in the ECF, was always more in the NMJ, but why was it not entering? क्योंकि calcium voltage gated channels को चाहिए something positive happening inside the axon का terminal, क्योंकि अभी action potential आ गया, प्लस 30 millivolts आ गया. So अब calcium voltage gated channels open हो गए और calcium का influx हो गया. ठीक है, but calcium का influx, like why do we want that? What was the aim? मसल में कुछ तो सिग्नल जाना है. मसल में सिग्नल विल गो थ्रू एसिटिलकोलिन. सो एसिटिलकोलिन के एक्सोसाइटोसिस में कैल्शियम विल हेल्प. व्हाट विल कैल्शियम डू इज कैल्शियम विल कंबाइन विद द प्रोटीन. कैल्शियम विल कंबाइन विद द प्रोटीन and both of these will carry acetylcholine in vesicles and cause the exocytosis. The name of the protein is not important. It is synaptotagmin, but okay. So not important. So acetylcholine का वो exocytosis करा रहे हैं. Why exocytosis? क्योंकि मसल को हमको सिग्नल देना है. अब तो इतना तो क्लियर हो गया होगा, I feel. Then acetylcholine आ गया. Now it has come into the space. It has come into the junction. Now, so calcium was more. Calcium influx is done. What other ion was more? It was just sodium ion. Okay, so sodium ion is also more. So calcium has come here now. Sodium is also more. Calcium has gone inside here and acetylcholine has come here. Acetylcholine आ गया. Okay, ये क्या था? ये था तुम्हारा skeletal muscle fiber. This yellow thing over here is your nicotinic acetylcholine receptors. मतलब बेसिकली ये जो येलो कलर के है ये डुअल फंक्शन है. एक तो ये एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर्स है, प्लस दे आर सोडियम लाइगेंड गेटेड चैनल्स. ओके, एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर है. सो एसिटिलकोलिन जो आया है वो बाइंड करेगा. इट इज गोइंग टू बाइंड ओवर दीज निकोटिनिक एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स. ये कहाँ प्रेजेंट है? ऑन द टॉप, नो? सो यू कैन सी ऑन द क्रस्ट, ऑन द क्रेस्ट. ओके, they're present on the crest. So acetylcholine receptors पे acetylcholine has come and is bind. Okay, now as I had said that acetylcholine के receptors they serve as a dual function. They are receptors as well as they are sodium ligand gated channels, meaning
As soon as acetylcholine will bind over them, these channels will open up. These channels are going to open up and they'll cause the influx of sodium. And yay, that was our aim. We wanted कि skeletal muscle fiber में कुछ action potential change हो. कैसे होगा? Sodium के influx से. And yes, that has occurred. So what we see is sodium has come inside the skeletal muscle fiber. Now, so मतलब action potential. So you may say कि action potential is generated in the end plate, because मैंने बोला था कि skeletal muscle fiber, this end is called as end plate. But no, okay, action potential is not generated. This is kind of a twist. यहाँ पे local potential is generated. ये जो skeletal muscle fiber है, जहाँ पे sodium का influx is occurred, there local potential is generated. Now action potential, local potential, if you're not clear, I'll clear it in my further upcoming videos as well. But local potential generate होता है, मतलब it is not as strong enough कि action potential generate हुआ है. क्यों? Because what I had said, यहाँ पे ligand gated sodium के channels है. And if you had seen my previous videos, the first video, I had said कि ligand gated channels में इतना influx is not going to occur. So वो बहुत limited influx of sodium कराते हैं, but it's very limited, मतलब it is distance limited. So local potential ही generate होता है, action potential नहीं generate होता है. So MCQs have been asked कि end plate potential पे which kind of potential is generated, the action potential or local potential. So it is your local potential. So end plate में local potential is generated. Okay. If you want to go in more depth, कहूँगी एक very nice line has been written which says the current sink is created by this local potential. See, sink क्या होता है? It is going to attract something. Sink means it is going to attract something. So सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ है अगर, तो बाहर जो सोडियम था वो तो कम हो गया, राइट? सो द आउटर मेम्ब्रेन हैज बिकम नेगेटिव. और यहाँ पे जो एडजेसेंट मसल स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं, सी यहाँ पे नेगेटिव हो गया क्योंकि सोडियम आ गया अंदर, राइट? बट यहाँ पे तो वही है. सो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट योर. सो दिस एंड प्लेट पोटेंशियल विल एक्ट एज अ सिंक, क्योंकि नेगेटिव हो गया वहाँ, सो इट्स गोइंग टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर सोडियम. बट यहाँ पे बिकॉज दीज आर लाइगेंड गेटेड चैनल्स, लोकल पोटेंशियली जनरेट होगा. बट whereas on the adjacent skeletal muscle fibers you will see action potential generate होगा. Local potential, why did I tell that local potential is generated? Because the sole reason was ligand gated channels. Ligand gated थे, इसके लिए voltage gated होते तो action potential हो जाता. So वही है. अभी adjacent muscle fibers में action potential क्यों generate हो रहा है? Because adjacent muscle fibers will have voltage gated sodium channels. Okay, they'll have voltage gated sodium channels. So adjacent में action potential is generated, end plate में local potential is generated. Okay, now we'll go through the steps. Okay, should be able to answer sequence. सबसे पहले क्या था? मोटर न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल आया था. सी आई वांट यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. मोटर न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल आया, दिस इज गोना बी द फर्स्ट स्टेप. फिर क्या हुआ? बिकॉज एक्शन पोटेंशियल आया, पॉजिटिव हुआ, तो कैल्शियम की एंट्री हुई थ्रू वोल्टेज गेटेड चैनल्स. ओके, करेक्ट. कैल्शियम की एंट्री हो गई, कैल्शियम विल कंबाइन विद द प्रोटीन एंड एसिटिलकोलिन को वेसिकल्स में लाके इट विल कॉज द एक्सोसाइटोसिस. सो एसिटिलकोलिन का रिलीज हो गया, एसिटिलकोलिन का रिलीज हो गया, सो इट विल बाइंड टू द रिसेप्टर्स. एंड वो रिसेप्टर्स डुअल फंक्शन थे, वो सोडियम लाइगेंड गेटेड चैनल्स भी थे. सोडियम की एंट्री हो गई. यहाँ पे जो एंड प्लेट पे पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो लोकल करंट है, whereas जो यहाँ पे एडजेसेंट है वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल हो रहा है. बाकी फिर प्रोपोगेट होएगा वो होगा एक्शन पोटेंशियल. एंड नाउ हाँ, दिस आई डिड नॉट टेल, सॉरी. सी कब तक इन्फ्लक्स होगा? सी दिस वॉज योर चैनल एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स का, बट टिल व्हेन विल सोडियम गो ऑन एंटरिंग? ओके,
we don't always want the muscle to be contracted or relaxed, right? We want the signal to stop at a certain point. For stopping the signal, what is going to happen is क्यों sodium was able to enter? Because acetylcholine bind क्या था, इसके लिए इसके gates open हुए थे. तो हमारा main problem is acetylcholine now. बस हो गया now we don't want more further contraction or relaxation. Okay, so acetylcholine को degrade करना है हमको basically. So acetylcholine degrade होगा over here. Okay, this bit over here, यहाँ पे acetylcholine degrade होगा by the enzyme called acetylcholine esterase, ठीक है. acetylcholine को break करेगा into acetate plus choline, जिसमें से choline फिर से जाएगा acetylcholine बनने के लिए. Okay, so hope you have got it, and it would really mean a lot if you would comment and share. Okay, so yeah, thanks for watching.